Hello everyone. Today we are going to discuss the business of Dynamic Services and Security Limited, and you will understand by the end of the video why we have named the title of the video as a tale of a dynamic management. So let's get started. Okay. So Dynamic promoter has three companies listed on the exchange. So another is Mihai Technologies and Destiny Logistics. We will come to it, but these are the three companies that are listed, and we'll majorly focus on Dynamic, but we'll also briefly look at other two companies. Okay. So what does Dynamic Services and Security do? So they are, as the image suggests, they are essentially into the business of cleaning. So let's say any cleaning work that has to be done in railway stations or any other government organizations, hospital, colleges, housekeeping work, or any other work of such nature is generally handled by a dynamic service where they essentially supply the manpower and get the work done. So yes, obviously the customers are railways, Indian or government organization, hospital, colleges. Indian Railway is their major कस्टमर. सो एसेंशियली वो ब्लू कॉलर स्टाफ प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, राइट? सो we'll look at the order book just to get a sense कि what kind of orders do they generally execute. So if you look, उनको एक रेलवे रेलवे स्टेशन का हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला, राइट? सप्लाई ऑफ फ्रेश एग मिला है, पोटैटो एंड ऑनियन सप्लाई करना है कोलकाता में कहीं पर, राइट? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर, हायरिंग करना है आउटसोर्स कैश वैन इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए, क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विस अगेन फॉर हॉस्पिटल, सम हॉस्पिटल, आउटसोर्सिंग ऑफ बॉक्स लोडिंग अनलोडिंग, बेसिकली जो कार्गो ट्रेन जाती है उसमें जो बॉक्स अनलोडिंग करना है ईस्टर्न रेलवे में बिलासपुर में, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है. अगेन हाउसकीपिंग सर्विस है ये, आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट रनिंग अगेन हाउस सॉर्ट ऑफ हाउसकीपिंग सॉर्ट ऑफ अ सर्विस, राइट? right, and electrical assistance office boy, planning assistance again. For Bharat Petroleum, they've got some kind of odd job order, right? So this is the kind of order these guys execute. This is just indicative, the kind to give you sense कि किस तरह के orders these guys execute. Okay. So how did the company come into being? So Dynamic Service basically इसके तीन promoters हैं, उनके खुद के sole proprietor entities थी. वो सब सोल प्रोप्राइट एंटिटीज को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मर्ज करके बेसिकली उसको 2021 में लिस्ट करा दिए, राइट? दैट इज हाउ द कंपनी केम इनटू बीइंग. सो एसेंशियली 2019 से पहले या 2021 से पहले का, हाँ 19 आई थिंक दिस 2019 में ये चीज आई थी, तो 19 से पहले का एनीवेज यू विल नॉट गेट द फाइनेंशियल्स बिकॉज वो सोल प्रोप्राइट एंटिटी में थी. ठीक है. सो हाउ इज द होल्डिंग स्ट्रक्चर करेंटली? सो there is three promoters, as I said: Rekha Devi Bhagat, Jugal Bhagat, and Rekha Bhagat. One of them is wife of Jugal Bhagat, and another is Bhabhi, which is कि मेरे उनके भाई के wife, right? Uh, so essentially, these three person hold the stake in the company. प्लस उन्होंने ना सेम डे जिस दिन डायनामिक सर्विस लिस्ट हुआ उसी दिन डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स, तो सेम प्रमोटर की दो कंपनी सिंगल डे पे लिस्ट हुई है. और डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स एसेंशियली ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वेस्ट बंगाल साइड पे. तो किसी चीज, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है और उनके पास कोई भी फ्लीट नहीं है, तो उनकी बैलेंस शीट देखोगे उसमें कोई भी व्हीकल नहीं दिखेगी. सो एसेंशियली जब भी उनको कोई ऑर्डर मिलता है तो किसी थर्ड पार्टी फ्लीट से वो लोग फ्लीट अरेंज करा के अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं. एक्सट्रीमली लो मार्जिन बिजनेस, 5 to 7% का मार्जिन जनरली इस बिजनेस में मिलता है. तो उनका कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिकली स्पॉट मार्केट से फटाफट लेते हैं और इधर फ्लीट दे देते हैं. दैट्स हाउ बेसिकली द ट्रेडिंग, दे आर डूइंग ट्रेडिंग ऑफ सर्विस एसेंशियली. सो हाँ, सो देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वेयर डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स में इनका कुछ स्टेक 65% स्टेक है. डेस्टिनी लॉजिस्टिक इन टर्न्स 17% स्टेक डायनामिक सर्विस में होल्ड करती है. दे हैव क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ वेब, एंड दिस वेब इवन गेट्स मोर इंटरेस्टिंग. वी विल कम टू इट नाउ. व्हाट दिस गाइस डिड वाज, लिस्ट डायनामिक सर्विस की लिस्टिंग के 4 दिन बाद ही उन्होंने एक एक्विजिशन अनाउंस किया मिहाई टेक्नोलॉजीज का. वो कंपनी 44-45 रुपीज पर शेयर पे ट्रेड हो रही थी उस टाइम पे, बट उन्होंने वो कंपनी को 2 रुपए पर शेयर पे एक्वायर कर लिया प्रमोटर से. नाउ मेरे को मेरी समझ के ये चीज बाहर है कि हाउ डज अ प्रमोटर सेल देयर कंपनी विच इज कोटिंग एट 44-45 रुपीज फॉर 2 रुपीज. एंड एसेंशियली उन्होंने अपने उस बिजनेस का वैल्यूएशन 2 करोड़ पे ले आए थे.
राइट. ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ. ओपन ऑफर जनरली 46 रुपीज पर शेयर पे ट्रिगर हुआ, बिकॉज ओपन ऑफर जनरली तुम्हारे लास्ट ट्रेड कुछ पीरियड ऑफ प्राइस से सेबी के फॉर्मूला के थ्रू डिटरमाइन होता है, तो देयर इज नॉट मच चांस ऑफ मैनिपुलेशन देयर. बट अदरवाइज यस, उनका नेट नेट हुआ ये कि उनकी होल्डिंग 75% के ऊपर चली गई. एनी प्रमोटर कैन नॉट हैव मोर देन 75% होल्डिंग इन द लिस्टेड कंपनी. तो उन्होंने ओपन मार्केट में अपने स्टेक सेल किए, which resulted in almost gain of 9 crores. Right. So it was an interesting transaction, this May Technology. So net today they have 56% stake in May Technologies. नाउ ये कंपनी करती क्या है? तो ये बेसिकली क्रोमा की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक चेन है जो ईस्टर्न इंडिया में है. सो इफ यू नो लुक एट मीआई वेबसाइट, सो इट्स जस्ट अ रिटेल चेन जहाँ पे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, वॉशिंग मशीन, आई एम श्योर फोन वगैरह भी बेचते होंगे. बट हाँ, ये फोन भी बेचे. तो essentially it's like a Chroma or Vijay Sales or anything. We know what this business model is, right? So I'm not sure why does a blue collar staffing company goes and acquire a retail electronic chain. मतलब it doesn't make really sense. But anyways, so this is what they've done. Now, why this stock is into discussion lately is because they're getting into the solar business. And for getting into the solar business, they've created a complex web, as you can see on the screen. Uh, so we'll just touch upon each one of them slowly. So first is Soles Cogen Private Limited. So Soles में ये लोगों ने 41% स्टेक एक्वायर किया था फरवरी 2024 में. अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है. द रीजन वो लोग ने सोलेस कोगेन में स्टेक एक्वायर किया क्योंकि वो एक 20 मेगावाट का मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहा है, सोलार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. एंड क्योंकि डायनामिक सर्विस इज गेटिंग इनटू द बिजनेस ऑफ सोलार ईपीसी, तो उनके पास एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सोलार पैनल्स रहेंगे फ्रॉम एसोसिएट एंटिटी. सो दैट इज हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड इट. बट अगर मैं इंडिया मार्ट पे जाके सोलेस कोगेन की लिस्टिंग वगैरह देखता हूँ, सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट that company is essentially listed as hygiene booth, decontamination chamber, disinfectant spray tunnel. So and they're essentially manufacturer of hygiene booth tunnel in Raigad, Maharashtra. So it's interesting that this company is registered as, I don't know, hygiene booth, whereas they're getting into the solar business. But if I go to Just Dial website and search for the same dealer or manufacturer, though they are registered as a solar company there, as you can see solar photos here, some of the photos of solar manufacturing plant and etc. here. Yeah. So I don't know why on one platform you're listed as something else and another platform you're listed as something else. But yeah, it gives me a sense that for Soles Coger, it's for the first time they are doing this kind of a business. And probably there would be a learning curve for the management of this company. Right. So other series of acquisition or activities that they've done. So in April 2024, they received an order of 725 crores to develop a 150 megawatt plant, solar plant, right? And execution timeline is 18 months. Now this is interesting because for a company where the top line is I think around 150 odd crores, getting a 725 crore order is a huge order for them. For even for a company जिन्होंने कभी आज तक सोलर का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया, राइट? सो interesting deal here. So yeah, sorry. Then in June 2024 they incorporated Dynamic Solar Green Energy, जिसमें उनका 60% स्टेक है और 6 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए. So we have touched upon, let me just click it. हाँ, so we discussed this company. We already have discussed this company. Now coming to Dynamic Solar. So इनमें इसका 58% स्टेक है, बट रेस्ट ऑफ द स्टेक इज स्टिल अननोन कि हु होल्ड्स इट, कि प्रमोटर डायरेक्टली ओन करते हैं या कोई और टेक्निकल एक्सपर्टीज के हिसाब से किसी को लिया हुआ है. नो क्लू हियर, राइट? Coming to in July, they they created a JV with Nefcon Urja Private Limited, where 51% JV. So as you can see, this is a 49% JV where Dynamic Solar, which is a 60% subsidiary of Dynamic Services, owns 49% stake in this entity, and Nefcon Urja holds 51%. Now Nefcon Urja is a renewable energy company. Now if I go to their website, so due to some reason I don't know why the website is not working. Otherwise, from the images that I can see, I make a sense that they're into solar panel manufacturing or some kind of development, or they're into
more or less, renewable energy business, right? Uh, due to some reason I'm not able to access their website. Yeah, not sure. Anyways, so this is Nefcon Urja. Now, another interesting deal that they got was ki they signed a PPA on behalf of they signed a sorry MOU with नेफकॉन ऊर्जा वेयर नेफकॉन ऊर्जा के पास ना 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क है जिसके पीपीए राइट्स उनको सेल करने हैं बट खुद से सेल करने की जगह वो लोग ने डायनामिक सर्विसेज को ये काम दे दिया कि तुम मेरे बिहाफ पे पीपीए साइन करो एंड डील क्लोज कर दो सो इट्स एन इंटरेस्टिंग ऑर्डर जो पहली बार डायनामिक को मिला है अनदर इज कि दे साइंड अ एमओयू विद संजीविटी एंटरप्राइज जहाँ पे 100 मेगावाट का सोलर प्लांट उनको डेवलप करना है ये एसपीवी में डायनामिक को ऑलमोस्ट 85% स्टेक होगा so this is the entity where they will have 85% stake and sun's activity again is renewable construction bpo service they manufacture solar panel street lights solar pump water heaters right all the solar products that they can think of yes so again they're tied up with some company which have technical expertise or something right in august these guys acquired 100% stake for 45 crores in Bharat Energy, Bharat Battery. Now, this company is a lead acid battery manufacturer, and I'm not sure why in the solar foray they went into lead acid manufacturing, but yes, uh, this is Bharat, where they acquired 100% stake. So essentially, we have touched upon all the uh, ventures that they've done to get into the solar business. Okay, now let's come to the promoter. So as essentially said, there are three promoters to this business: Rekha Bhagat, Jugal Kishore Bhagat, and Mrs. Rekha Devi Bhagat. Now, this guys hold managing director, non-executive director, executive director position in the company. But if I look at the qualification, bachelor's of arts, bachelor's of commerce, bachelor's of arts, and even another executive director in the company is higher secondary pass out. So essentially, since they're trying to get into solar business, आई एम नॉट एबल टू सी कि कहीं पे उनका वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है टू गेट दोस काइंड ऑफ ऑर्डर प्लस 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें विच इज़ अ ह्यूज ऑर्डर फॉर एनी कंपनी बिकॉज उसके लिए टू गेट अ 700 करोड़ ऑर्डर यू नीड अ बैलेंस शीट ऑफ एटलीस्ट 70 to 100 करोड़ ऑफ वर्किंग कैपिटल तो तुम्हें सिर्फ परफॉर्मेंस गारंटी के हिसाब से फर्निश करना होता है एंड अदरवाइज यू नीड वर्किंग कैपिटल टू सोर्स द सोलर पैनल एंड पेमेंट टर्म्स जनरली डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट टर्म्स जनरली तुम्हारा एक अच्छा खासा कैपिटल पैसा वर्किंग कैपिटल में अटकता है राइट considering this I'm not sure how the company is going to execute this kind of a project but okay I forgot to mention one interesting thing is that this 725 crores का जो order है ना apparently from seeing all the series of corporate announcement that I've seen so far for this company one thing I'm able to sense is that ये order ना नेफकॉन नितिन साई ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आने वाला है और ना कि डायनामिक सर्विस के अंदर सो एसेंशियली वो 725 करोड़ का ऑर्डर एक 60% होल्डी और सब्सिडरी की 49% एसोसिएट के अंदर आने वाला है इट्स वेरी फार राइट वो ऐसा नहीं है कि वो 150 करोड़ की टॉप लाइन में ऐड होने वाला राइट तो वो प्रोबेबली उनको प्रॉफिट फ्रॉम शेयर ऑफ एसोसिएट करके कुछ दिखेगा इफ दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ and if they're able to execute anyways so coming back to their qualifications so yes so far ऐसा दिख नहीं रहा है कि they can be probably how I'm not sure how they are going to execute this kind of a project plus if you है ना मैं टॉप मैनेजमेंट सीएफओ को देखूं तो सीएफओ में there is विनीता यादव जो डायनामिक सर्विस की सीएफओ है and she is currently pursuing company secretary ICSI and if you look closely she's BCom graduate जून 2019 में पास आउट हुई है सो if you back calculate she is essentially 1998 born you can accordingly calculate her age so she is very young in her career and so essentially what I sense is that she is more of a accountant she was accountant to the team of dynamic and just to fill the gap उन्होंने एक सीएफओ उसको सीएफओ का डेजिग्नेशन दे दिया एंड सेम थिंग इधर भी हुई है उनकी डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स जो मैंने बताया था इनकी दूसरी लिस्टेड कंपनी है उनके सीएफओ भी बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट है बट सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इट्स नॉट अ डिग्री इट्स सर्टिफिकेशन कोर्स और 3 years का मोरलेस उनके पास एक्सपीरियंस है तो अगेन टॉप मैनेजमेंट में इट्स नॉट कंसिडरिंग इट्स अ 500 odd crore मार्केट कंपनी दोनों राइट तो 1,000 crore प्लस चले जाते हैं बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन दैट दे कैन नॉट अफोर्ड अ गुड सीएफओ बट येट that is there
Plus, if I look at other independent directors and other top management, most of I have not seen anyone with a technocrat background. All of them are either BCom, BA graduate, right? Now, for a company, this may, if I just services. Now it's a 500 crore company, right? Me, me high. It's a 1100 crore company, and what was it? Destiny Logistics. Again, it's a 265. Sorry, I mistakenly told 500. So it's a 265 crore. So essentially, it's like 1500, 2000 crore odd group, right? Listed company में मिला के 1500, 2000 crore का company का मालिक है. Whoever the promoter is, right? Now, if I check their address, address, this I got from the DRHP. In Google Map, I'm not able to make sense why a promoter of a company, it's a Kolkata-based company, why a promoter of a company with 1500 to 2000 crore market cap, probably, let's assume that he has net holding of 50%. Then also it's like a 800 500 से 1000 crore का direct beneficiary is staying in this area. Not really sure, or it makes me question whether is he really the promoter, or is it just front for someone else, some political party being the promoter of the company, right? We need, because see, is the kind of orders that they're getting, the kind of qualification background they have, the kind of area they are living in, it still it that needs to be really questioned. Plus, there are some criminal cases against the promoter. So so essentially जो क्रिमिनल केस है ना, उन्होंने कुछ कंपनीज या जिनके साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट किए थे उनको ओवर बिलिंग किया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फर्निश किए वो इनकरेक्ट किए. एक एक करके आते हैं. सो लेट्स से इधर है वे डायनामिक सर्विस सप्लाइड लेस लेबर देन एज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए. Also, they have paid less wages to the contract workers and presented fake fabricated letters to the contractors and thereby causing wrongful gain of 2.5 odd lakh rupees. Similarly, Dynamic Service furnished the balance sheet and P&L account during the tender process, which was incorrect and untrue. Right now, thirdly, entry of handling of cylinders in the floor sheet was fabricated in order to inflate the number of cylinders in the bill and claim excess amount from Indian Oil Corporation. So, this gives me a sense that the company is somewhere. I'm not able to trust the management essentially after seeing this, and these are official orders, right? FIR number है essentially दोनों जगह पे. This again, the source for this is RHP of the company. So after this, it's difficult to really trust the management. Plus, the registered office है, and I think it's a very common pattern जहाँ पे registered office है वो ओनर प्रमोटर के नाम पे है, and listed company का head office वो बन चुका है and उसको rent पे दी गई है. तो this is the case here as well. Why management is not focused? So if I look at the series of corporate announcement, so dynamic service, anyways, I've discussed everything जो भी corporate announcement में हुआ है. Now coming to Mihai Technology. So in November 2021, just shortly after their dynamic services listing, they acquired Mihai Technology. Now here's where things get interesting. In July 2022, they acquired another electronic store, जिसका 16 इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट था बिहार साइड पे, which is fair. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तुम और इलेक्ट्रिक स्टोर एक्वायर कर रहे हो to grow your business, no issues there. But then in May 2023, you got an order to set up a rail near Peg's drinking water plant. So why does the electronic store essentially get this kind of an order? Then there are a series of fundraising and everything. Then again, in a series of order, they won 3 orders for deep tube well construction in West Bengal. Right, they 1, 2, 3. These are the 3 orders that they got to for tube well construction. Again, why does an electronic store get to set up a rail near packaged drinking water plant, construct deep tube well, and then again, this is an electronic store, but they change their object laws to get into the solar energy business. But despite that, in October 2024, recently, couple of months back, they acquired 51% stake in a business selling medicine OTC product in West Bengal. So you can sense, right? You have no clue where the management is going to take the next step. आज वो बोल रहे हैं हम सोलर बिजनेस में जा रहे हैं, suddenly they might decide no, I want to do something else, right? मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, मैं वो चीज करूंगा.
प्रोबेबली कोई डीप ट्यूबवेल का कंस्ट्रक्शन उठा लूंगा, कोई मेडिसिन के मेडिसिन सेलिंग मेडिसिन बेचने वाली कंपनी को खरीद लूंगा, यू नेवर नो. नाउ लेट्स कम टू डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स. सो डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स में भी सेम पैटर्न मिलेगा. नाउ डेस्टिनी लॉजिस्टिक इज अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, राइट. उनको ऑर्डर मिला है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. नो क्लू. Change their object lost, buying and selling immovable properties. Again, why are they doing this? I have no clue. Again, this is a valid contract where they've got monthly cab taxi hiring service. Other than that, no such announcement. So essentially, why I said key management is not focused is because they keep doing random stuff. उन्होंने एक सोलर का कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट कर दिया है जो हमने डिस्कस किया, बट अगेन will they follow through, or will they just see some other opportunity and just get into that part of the business? Plus, considering that all the CG issues that we discussed, criminal cases the promoter के against है, doesn't really make me trust the management and all this complex structure, and plus the complex structuring that they've done. Don't forget this structure, right? Complex structure तभी बनाते हो जब you want to probably hide something from someone. I'm not sure. So that is our take on this company. So when we got excited and looked at this business because of their solar foray, but then we decoded everything. We realized it's not worth uh, investing into. But again, please, so please do your due diligence. We are SEBI registered research analyst, and this is not an investment advice. This is just for the education purpose. Thank you.